क्या कहना चाहेंगे कंटेस्टेंट्स के साथ कितना कितना एंजॉय कर रही है या फिर कितना प्रिपरेशन अब तक पहुंचा है, कौन से लेवल पे? मैं बहुत खुश हूँ आज क्योंकि ये डाइडम मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का सीज़न 3 है और ये बहुत काबिल तारीफ़ इवेंट होता है हर बार क्योंकि सारी जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं हमारे फाइनलिस्ट होते हैं वो 2 कैटेगरीज़ में आते हैं, मैरिड एंड अनमैरिड, एंड सभी अलग प्रोफेशन से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं। महीनों की प्रिपरेशन होती है। हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो वर्चुअली पहले से ही ऑर्गेनाइज होने शुरू हो जाते हैं, तो ये घर बैठे ही मेहनत घर से ही 2 महीने पहले से चालू हो जाती है। ऑडिशन से स्टार्ट करते हैं और फिनाले तक की जर्नी बहुत खूबसूरत होती है। और जब इस प्लेटफॉर्म पे फिनाले के दौरान जब हम पहुंचते हैं तो इतना उस जोश के साथ पहुंचते हैं कि कुछ कर दिखाएंगे डेफिनेटली, तभी सभी आज लोग यहाँ पे इकट्ठा हैं। और बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वी हैव लॉट ऑफ विमेन दोज हु आर मल्टी टैलेंटेड। उनका जो हुनर है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, बहुत ही कॉन्फिडेंट है सभी लोग। और अपने प्रोफेशंस में चाहे भी वो स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वी हैव लॉट ऑफ एक्स कैबिन क्रू ऑल्सो। आई वाज वेरी हैप्पी टू लर्न दिस टुडे कि काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड से भी हैं। तो इतने सारे अलग अलग बैकग्राउंड से बहुत सारे होम मेकर्स भी हैं, तो बहुत खुशी होती है जब हम इस तरीके का प्लेटफॉर्म लाते हैं और होम मेकर्स को स्पेशली अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपने जो ख्वाब हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, जब वो अपने मकसद जो ख्वाब देखते आते हैं बचपन से और जब वो पूरे करते हैं, तो ये सिर्फ हमारी नहीं उनकी भी अपनी अचीवमेंट होती है, उनकी फैमिलीज़ के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ग्रेट फिनाले टुमारो। एंड बहुत सारे प्री राउंड्स जो हैं चल रहे हैं, जैसे कि आपने पूछा कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे क्या कंडक्ट कर रहे हैं और किस मेरा खुशी का लेवल क्या है, तो आप वो देख ही रहे हैं दैट एवरीबडी इज़ सो वेल ट्रेंड। एंड माई ऑल एंटायर टीम, मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो टीम में ट्रेनर्स हैं, वो हमारे कंट्री के सारे रिनाउंड नेम्स हैं। आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई हार्टफुल ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू आवर टीम मेंबर्स दैट दे हैव groomed our contestants so well that we are delivering the best of talent of entire Maharashtra through this platform. Yeah. Right. कल जो है विनर मिलने वाले हैं, 2 विनर मिलने वाले हैं, एक मिस का एक मिसेस का। जी। सारी लड़कियां यहाँ पर जो है फिनाले में हैं ऑलरेडी। क्या एक चीज़ आपने उनको बोली है उनको मोटिवेट करने के लिए और जी। उनका हौसला बढ़ाने के लिए? ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो दोबारा वापस नहीं आती है। सबसे पहले तो एक वो मोमेंट है स्टेज का जो एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता है। तो 1 मिनट के लिए वो टेंशन साइड में रख कर उस मोमेंट को एक तो पूरा जिया जाए। तो मैं हमेशा कहती हूँ लिव योर मोमेंट टू द फुलेस्ट और उसको यूटिलाइज़ करें। और उस जिस वक्त आप स्टेज पे हैं, ऑडियंस के सामने, मीडिया के सामने, जजेस के सामने, सेलिब्रिटीज़ के सामने, इतने सारे VIPs आते हैं, और उस वक्त को वो एक अपना सुपरस्टार मोमेंट माने कॉन्फिडेंस से। और उस स्टेज के वही सुपरस्टार होते हैं, जब चलते हैं तो वो 5 मिनट या 10 मिनट का जो मोमेंट है वो बचपन से उसी ख्वाब को जीना चाहते हैं। सो गिव योर बेस्ट। I always say that you are the rock star, you are the celebrity of that show already, and they are doing superb so far, and I wish them all the very best. Just one message that they need to look brilliant tomorrow and need to feel confident like always. Yeah. जैसे आपने कहा कि थर्ड सीजन की है, जी। आपकी टीम भी है, साथ में ट्रेनर्स हैं, तो हर साल क्या कुछ नयापन रहता है इसमें, और क्या कोई एक्साइटमेंट रहती है, नर्वसनेस रहता है कि आई मीन इट गोज ऑन वेरी एट अ स्मूथ लेवल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट, ऑफ कोर्स अलोंग विद योर मेंबर्स? हर साल डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द प्लेटफॉर्म ऑल्सो, फॉर द कंटेस्टेंट्स ऑल्सो। वी आर ग्रोइंग टुगेदर डे बाय डे। और इस बार जो खास बात ये है कि इंडियाज़ ओल्डेस्ट pageant media portal has tied up and joined hands with the Miss and Mrs. Maharashtra, which is TGPC, the great pageant community. I would like to thank the founder, Mr. Deepak Shahi, and we tried our level best to bring the best of the experts from the country, the core, pageant
pageant queen makers of the country, like Sarina Khat we have on board, we have Mr. Deepak Shahi, we have Nikita Prajapati, and we can't forget Mr. Khizr Hussain, who is the show director, man of the show. Always, he's been associated since 2018 so far with our brand. So हर बार हम चाहते हैं कि बेस्ट डिलीवर करें अपने कंटेस्टेंट्स को, और सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ तक कि ये सफ़र ख़त्म होता है, इसके बाद भी हम अपने कंटेस्टेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं जब हम बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और बेस्ट ऑफ द एसोसिएट्स को लेकर आते हैं, ट्रेनर्स को लेकर आते हैं, और मल्टीपल एसोसिएशन होती है बिकॉज इट्स अ टीम वर्क एंड वी नीड एन आर्मी विद अस टू मेक एन इवेंट सक्सेसफुल. So yes, we have definitely, I think, if we talk about past 2 seasons, this time it is grander, and it is we have a broader audience this time from entire Maharashtra, from different cities and from different places, and we are creating more opportunities. For example, our winners are going to represent of Mrs. category. They are going to represent Maharashtra in at national level, Mrs. India Legacy, and from there you are all aware, entire India is aware that we are successfully representing India at Mrs. Universe, now at Mrs. International Global, and hoping, my fingers crossed, to more international pageants as well in future. Yeah. Right. Nikita, tell us about your association with Amisha and how it is going, and tell us about your experience this time. Alright, so this is my very first edition with Diadem Miss and Mrs. Maharashtra. I had the opportunity to meet all these lovely girls in person for the first time. I have interacted with them in the virtual sessions. We also did one-on-one session with some of the contestants. So far the energy has been remarkable. Today I just delivered my session, and the spark that these ladies are carrying within them, I think this is going to take them long way, not just in this pageantry but in life in general. So I would just like to wish all of them a very good luck, and just advise, be the best version of yourself in these 2 days. And yeah, I'm really hoping that the finale is grand, and I'm looking forward to having a great time as well. Deepak ji, tell us about your association with Amisha ji and Diadem. Yeah, so I've been associated with Diadem pageant for, I think this is the 3rd year. Yes. And हम पहले Miss and Mrs. India पे हम associated थे, and this year we also associated with Diadem Miss and Mrs. Maharashtra. So एक चीज़ मुझे जो अमीशा के पैजेंट के बारे में लगी कि शी फोकसेस अ लॉट ऑन विनर्स ग्रोथ. अगर आप उनके मिसेस इंडिया के विनर्स को देखेंगे, द ट्रांजिशन दे गो थ्रू इन 1 ईयर, एंड स्पेसिफिकली लाइक मैंने देखा है लास्ट 2 साल के जो विनर्स है. सो आई वॉज वेरी इंट्रीग्ड एंड वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्टेट पैजेंट नाउ, बिकॉज यहाँ से जो लास्ट ईयर की विनर थी, शी एंडेड अप बीइंग अ रनर अप एट मिसेस इंडिया एज वेल. सो दैट इज़ ग्रोथ चार्ट. कोई भी पैजेंट का एक जो जर्नी होता है वो फिनाले से डिसाइड नहीं होता है, उसके विनर्स क्या कर रहे हैं आगे लाइफ में उससे होता है, एंड वो चीज़ मैंने डायडम में देखा है. सेकेंडली, हमने सारे ट्रेनर्स ने ऑनलाइन सेशन दिए हुए थे, तो एज सच दिस कुड हैव बीन चॉप्ड ऑफ फिनाले में से. बट जब मेरी अमीशा से बात हो रही थी, मैंने बोला फिजिकली फिर आपको ये चाहिए तो कुछ हम और करते हैं, व्हाई डू यू वांट अस टू रिपीट. तो शी सेड आई वांट यू टू रिवाइज एवरीथिंग सो दैट मेरी लड़कियां जब परफॉर्म करे वो एक सब्सटेंस लेके जाए, वैल्यू लेके जाए, तो इवन दोज गर्ल्स हु डोंट विन हियर, उनको ये लगे कि दे हैड सम एडिशन टू देयर लाइफ, जिससे आगे चल के लाइफ में से समटाइम पैजेंट इज नॉट योर डेस्टिनेशन. There are many other things that will unfold after you participate in a pageant, which I see here happening. So one thing that I want to tell to every girl here is, while everybody wants to compete and win the crown, focus on the experiences, because 1-2 साल बाद आप जो याद रखोगे वो क्राउन नहीं होगा, वो फिनाले नहीं होगा, वो एक्सपीरियंसेस होंगे, और जो ग्रूमिंग आपको यहाँ पे मिलेगी वो चीज़ होगी. सो दैट्स ऑल आई वांट टू से. आई हैड अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, एंड आई एम looking forward to a wonderful association in going further years as well. Thank you. Ma'am, tell us about your association, and tell us about your experience of today's session. My experience is wonderful. It's always great to be with my Diadem family. It started last year, and I was very apprehensive because मेरे ऐसे आलतू फालतू काम उठाना पसंद नहीं है. But when I got associated with Amisha, it was just like meeting my soul sister. We don't have rules. Amisha and I will pick up trash from the floor if we need to, and that's the kind of person I like. I think that the most important thing that I see is the care that she does, the genuine care that she has for the girls and her people around her, not just her girls, but people that work for her. And that is something that I really, really
appreciate about her. And it has always been, it's very difficult to find genuine people in an industry like this. So meeting Misha has been a revelation to me, and I'm very happy to be associated. And whether she likes it or not, I will continue to be associated with her. Coming to the director of the show, how's an experience? I mean, हर साल क्या कुछ नया हम देखते हैं? Of course, last year भी हमने देखा. इस साल कुछ क्या नया expect कर सकते हैं for the audience and of course for the people associated? हर बार यहाँ पे डाइडम से मेरा एसोसिएशन स्टार्टिंग से है. आई थिंक 6 years नाउ. एंड नेशनल पैजेंट भी हम करते हैं और ये स्टेट पैजेंट भी कर रहे हैं. तो हर बार जो मैंने देखा है कि हर चीज़ लेवल अप होती है हर बार. और हर बार अमीशा का ये कंसर्न होता है कि शी इज़ इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, लाइक नॉट ओनली कि बैक एंड में क्या चल रहा है, शी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन शो डायरेक्शन कि मेरा म्यूज़िक क्या है, मेरी लड़कियाँ कैसे परफॉर्म करने वाली हैं. तो वो जो कंसर्न है, मैं कंट्री के काफ़ी सारे पैजेंट्स करता हूँ, बट इतना इन्वॉल्वमेंट हर ऑर्गेनाइज़र से या हर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलता है. बट ये देख के मैं भी यहाँ पे 200% अपना देता हूँ ताकि शी इज़ हैप्पी एट द एंड के चलो मेरा डायरेक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, अच्छा कर रहा है, एंड शी इज़ इन्वॉल्व. तो वो देख के हमें भी अच्छा लगता है कि समबडी हु इज़ मोर पैशनेट टुवर्ड्स हर कंटेस्टेंट्स. वो एक आर्ट के लिए लव दिखता है कि मतलब अपने कंटेस्टेंट्स के लिए क्या अप्रोच है एक ऑर्गेनाइज़र का. ये बहुत कम देखने मिलता है इस इंडस्ट्री में कि एक ऑर्गेनाइज़र अपने कंटेस्टेंट्स के लिए खड़ा है, आखिरी तक खड़ा है और उनके अच्छाई के लिए सब कुछ कर रहा है. मतलब नॉट ओनली जस्ट कि वो क्या कपड़े पहनेगी, बट हाउ वाज हर हेयर लुकिंग. वो अभी यहाँ पे भी आ रही थी तो देख रही थी कहाँ बॉटल तो नहीं रखी है, कहीं अच्छे से सब टाइडी तो है. तो शी इज़ फोकसिंग लाइक ऑन ईच एंड एवरीथिंग. वो देख के मुझे एक इंस्पिरेशन मिलता है उससे. हर बार मैं उससे ये बोलता हूँ कि अमीशा, यू आर समवन हु आई लुक अप टू एंड दैट्स व्हाई आई एम बीइंग लाइक एसोसिएटेड विद हर फॉर लाइफ लॉन्ग. सर, टेल अस अबाउट योर एसोसिएशन और क्या कहना चाहेंगे सर? ही इज मैन ऑफ द मैच, माय हस्बैंड. तो सर कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर, क्योंकि हमेशा बहुत सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन आपके ऊपर भी वो प्रेशर रहता होगा कि मतलब सब फ्लो में जाए, स्मूथली हो जाए. सर क्या कहना चाहेंगे? I think being a part of core team, the pressure starts from the very beginning. There are hundreds and hundreds of applications coming in each week. और उसके बाद हर applicant से personally बात करके समझना, उनको evaluate करना और फिर finally उनको select करना, ये एक बहुत ज़्यादा it takes a lot of energy and also a lot of psychological evaluation कि वो fit है कि नहीं. तो जो भी आप देख रहे हैं, these are the final 27 सॉरी. एंड ये जो 27 contestants हैं, ये सारे एक filtered process से आए. I think we would have had close to about 1,000 applications this time. और 1,000 में से ये final 26 है, तो आप समझ सकते हैं कि उस level तक filtration होती है. और we know all these 27 are deserving. They are the best of what we had. And यही नहीं, इसके बाद then the team, the experts, everybody gets involved. We groom them, we ensure that the best talent goes on the stage. और finally the entire team is like a family. तो lot of involvement, lot of care, ethical code of conduct, principles से चलते हैं हम. And then family comes together in ensuring that the show goes right. हमारी रिक्वेस्ट टीम से यही होती है कि लास्ट ईयर जो किया था उससे एक लेवल अप, एक नॉच अप करना है. क्रिएटिविटी हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो वो करो. फ्रॉम द टीम, फ्रॉम द डायरेक्टर, फ्रॉम ऑल्सो द ग्रूमर्स एंड ट्रेनर्स. बट वी जस्ट रिक्वेस्ट देम दैट वी हैव टू डू वन लेवल अप. जो लास्ट टाइम किया था उससे बेंचमार्क से एक लेवल ऊपर करना. सो दिस इज़ व्हाट वी थिंक, दिस इज़ व्हाट टेक्स अस टू द हाइट्स, एंड दिस इज़ व्हाट हैज़ मेड अस सक्सेसफुल इन लास्ट 6 years for the nationals and 3 years for the state Miss and Mrs. Maharashtra as a pageant. हमेशा ही फैमिली जब साथ में आती है, of course becomes a very crucial point. You know, एक सपोर्ट मिल जाता है. बट क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे, क्रिएटिव फ्रंट पे कभी कुछ अनबन होती है आप दोनों के बीच में? बहुत होनी भी चाहिए. डेफिनेटली उसको मैं हेल्दी कॉन्वर्जेसन का नाम दूंगी, और वो होनी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से ग्रोथ होती है.
बहुत बार ऐसा होता है कि विदाउट डिस्कशन आई डू नॉट क्लोज एनी सब्जेक्ट वेदर इट्स इन माई family or in my or at the pageants. So when I talk about the conversations, it means that if we are working on something in the pageant, be it a state or nationals, I take suggestions from the entire team. Definitely the first go-to person is always Mr. Rudraksh, but after him I do I make sure that I take suggestions from my team members, be it my show director, or I call them a lot and ask them a lot of questions. I do not hesitate. So that's a kind of approach I always carry in me, that I never think that I am the superior or I am the boss and I know everything, I will rule and I will execute, and you are no one to tell me no. So this I think this will be a very wrong approach for anyone, not only me. So I definitely take suggestions and do a lot of discussions before closing and coming to any sort of conclusion while we are making an event flow or shortlisting a contestant, or going for an international project, or finalizing the costumes, or making the music, or making the creatives, or a social media campaigns, or a photography. So we do conduct a lot of briefing within us, amongst us in the team, and we talk a lot, and this is how we are growing together. As you can see कि हम लोग सब लोग बोल रहे हैं कि हम 6 साल से, हम 3 साल से, 4 साल से एसोसिएट हैं. वो इसीलिए एसोसिएट है that I never like to command. I like to ask more, and I like to discuss more, and I think this is a healthy way of of anything, be it a business or a pageant or a family conversation or anything. So I love talking and deciding things and discussing a lot. And one more thing I would like to definitely say to everyone present here, that we should learn from each other. हो सकता है कि हमारी कहीं मिस्टेक्स हों, और उस मिस्टेक से हम सीखना चाहते हैं. हम उस पर डिफेंड नहीं करते हैं कि नहीं ये वी डिड इट रॉन्ग, वी डिड इट एब्सोल्युटली राइट, ये ऐसे ही होना था. वी नेवर से दैट, बिकॉज वी वांट टू ग्रो एंड वी वांट टू डू बेटर. Each season we are growing because we are learning from our past experience. So whether it's our contestants, our finalists, or team members, or management, or anything, we learn from each other. So it's that's how I think the growth is calculated, and I think this is the best way. Thank you so much. My name is Yashashri Kulkarni Parikh, and I'm really proud and happy that I am a finalist in Miss and Mrs. Maharashtra 2023, the season 3, and this is the one where we have broken the barriers and the norm, and this year Mrs. category has more participants than Miss category. We've had 6 or more than that offline sessions about being in a pageant. For somebody who's very naive to this industry, it was an amazing experience, right from pageant walk to communication to styling to question and answers. And today's face-to-face session is like an icing on the cake. We're really loving it. One, meeting everyone, and then meeting the trainers and getting to learn from them. This experience itself is a huge takeaway from this pageant and the event we are here. And also I just want to give a heartfelt and a humble thank you to Amisha ma'am for giving us this wonderful opportunity and exposure and a learning and choosing us to be here. Thank you so much, Amisha ma'am, and thank you, Diadem. Hello. Everyone, namaste. I'm Dr. Shalaga Bhatnagar, a dental surgeon by my qualification, a pharmaceutical physician, and a marketeer who specializes in the field of women's health. And I'm extremely enthralled today to be here, and I am competing for Mrs. Maharashtra 2023, organized by Diadem. Well, growing up in my world, it was nearly impossible to reach to this platform. But I'm here today at the age of 29, competing for Mrs. Crown, and I'm extremely thankful, and I would want to pay my gratitude to Diadem, not only for this platform, but also to give me an opportunity to serve and to be a part of the association with Ladli Foundation, as I closely associate myself with serving the women and growing them for their health and betterment. I absolutely am honored to be here and looking forward to be making more friends in the group of strangers today. Thank you. And I would also want to add something that during this course of 3 days, I would want to be a great student. I would want to learn
unlearn and relearn. Thank you. Super excited. We all are so Everything excited. together. Everything together. On your faces, actually. Yeah, actually, we got so much of knowledge here. Believe me. यहाँ पे आई हर एक लड़की के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली जो मैरिड वुमेन है, अपने एक कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने लिए कुछ करने के लिए एक बड़ा मौका है। एंड मैं इसीलिए बहुत थैंकफुल अमीशा मैम की, क्योंकि उन्होंने जो सीखा उसको अपने पास सीमित नहीं रखा। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे मेरी जैसी और यहाँ पे मौजूद मेरी दोस्तों की जैसे कॉमन लड़की भी एक बड़ा सपना देख सकते कि हम ब्यूटी पेजेंट में जाएं, सीखें, जीते ना जीते, बट आज हम जो सीख के जाने वाले हैं वो हमारे लिए लाइफ टाइम लर्निंग रहेगा। Yeah, and she has a very strong army. I must say that Deepak sir, Sarina ma'am, and Neha ma'am, and of course Mr. Chaudhary sir. He was our first person. He shortlisted us, and that's why we are here, I guess. So I must say that journey was amazing, and till here, journey is amazing. I must say. She meticulously take care of every small, minute things of our this journey, and I'm so much thankful for her. I'm a mom of 2 kids, but see, I'm here today, and that's the most amazing thing. Wow. So I totally agree with what that Tejasvita has just mentioned. So the journey, pageantry journey up till now has been a remarkable one, wherein we've got an opportunity to connect with incredible individuals, showcase our strengths and talents, and also have some meaningful conversations. And I'm really grateful to Amisha ma'am for giving this opportunity, because it's like a dream come true. It's very rare that we've been waiting till now at the age of 40 for this opportunity, and yeah, we were looking for the right platform, so absolutely. And plus we are getting the kind of expert grooming sessions from the industry experts like Serena ma'am, Deepak sir, and Nikita ma'am. So the entire journey has been incredible. This is the dream of my mother-in-law, and that's why I'm here. And in fact, this even is for a me, big my thing. mother-in-law said, जाओ बेटा जीत के आओ, यहाँ पे पीछे मैं सब संभाल लूँगी। तो आज वही है कि एक वुमेन दूसरे वुमेन को एम्पावर करिए, सपोर्ट करिए, सो हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट करके हमको एक अलग पावर, एक अलग स्ट्रेंथ ही मिलती है, हम आगे बढ़ रहे हैं। Without family support, Possible It's not possible. yeah, it was not possible for us. That is a big thing over here. Because we also have kids, we have kept them at home. That is a big thing. That's why we are enjoying here without any second thoughts about what's happening at home. And like without any worries, we are here. And your life decisions sort of change completely. It becomes a 360-degree turn once you're married, right? So it's no more just your individual decision. Of course, I'm sure all the women standing here are individual, strong decision makers. But it also becomes very cohesive in nature with what and how your in-laws, support you. And most importantly, your better half, who is going to be and who must be the biggest cheerleader for all the women who are standing here. So I think that would have not been possible. This would have not been possible without them. True that. Absolutely.